Yeah, we are live now. Can start. So this is Divya Divakar with us. She is a Nutri expert coach. She is going to interact with you all. You can ask any questions to her. So what do you, Divya? Thank you, Monica ma'am, and a very good afternoon to all of you. Today, I'm going to talk about a very important topic, which is faced by every females, like it's nutrition at 40 and beyond. It's a very common problem which is faced by women who are in their midlife. Like you can say precisely post 35. 35 ke baad mein, we women face many problems, be it physical problem like gaining weight, your looks are changed, your hair change, your skin textures change. Then there are hormonal issues. So we, as a females, face lots of problem post 35. So keeping that in mind, I'm giving this talk that is nutrition at 40 and beyond. The journey of a female that starts with a newborn, then to a toddler, then a young one, then in the teenage, then adult life, then that female become a mother, then she takes care of the babies along with work and home. So we female faces lots of responsibilities. Either there is it is it matters nothing that if even if you are homemaker, if you are a homemaker, आप उससे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो एक जब वर्किंग फीमेल फेस करती है. So we all face such problem, and we every time think, जब 40s में आ जाते हैं ना, वी थिंक दैट काश मैं पहली जैसे मेरी बॉडी थी मैं वैसा कर पाती, बिकॉज दैट टाइम वी वर फिट, वी वर एनर्जेटिक. अल्दो अगर आप वेट भी ज्यादा रहे, बट वी वर फिट एंड मोर हेल्दियर, और यू कैन से we used to feel more energetic as compared to our 40s. That time we didn't respected our body. We thought कि नहीं और थोड़ा सा weight loss हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, and then we do lots of things which affects our body, and it is shown in a long term. Like it's can the way we live in our 20s, it is shown when we are in our 40s. So it is very important that we follow a healthy lifestyle. Now, why nutrition is important post 35? Because there are weight fluctuations. It is very common. Every second or third females who is in the 40s or late 30s faces weight problem. Most of them gain weight, especially in the middle body. And एक ही complaint रहती है सबकी कि weight without any reason बढ़ रहा है. Then there is change in bone density. Females की bone सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है with aging. एक normal human process है that as we age there are changes in a body, be it men और वुमेन, दोनों की बॉडी में चेंजेस आते हैं. बट जो बोन डेंसिटी की चेंजेस आते हैं वो फीमेल बॉडी में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मेल बॉडी. एंड इसलिए आप लोग ने सुना होगा वेन एवर वी कीप हियरिंग की XYZ फीमेल इन हर 70s हैड हिस्ट्री ऑफ फॉल, एंड उसका डायरेक्टली हिप फ्रैक्चर हो जाता है और शी फेसेस बोन फ्रैक्चर्स. Why? Because bone density with age change हो जाती है. So that's why nutrition is important. Then the major thing which females faces post 35 is मेनोपॉज. मेनोपॉज जनरली होता है कि लोग सोचते हैं 40 प्लस हो जाए तब होता है, बट देर इज अ थिंग कॉल्ड पेरीमेनोपॉज. दैट इज मेनोपॉज आने के 5 to 6 years पहले ही आपके हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, आपके पीरियड्स में चेंज होते हैं. नॉट एवरी फीमेल फेसेस, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल कैन फेस दैट. वो समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है, बिकॉज एक थिंकिंग है कि मेनोपॉज है तो वो 45 प्लस या 50 में होगा. बट नो, विद द चेंजिंग सिनेरियो आपकी अपनी हैबिट्स चेंज हो रही है, ईटिंग पैटर्न्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग, स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग इन अ लाइफ डे बाय डे. ये जो हार्मोनल चेंजेस है वो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं. सो वी नीड राइट करेक्ट डाइट लाइफस्टाइल to overcome that hormone fluctuations. Then there is changes in skin and hair. बालों की मतलब थिनिंग होने लगती है या स्किन डल और ड्राई होने लगती है तो इट चेंजेस कम. देन डिक्रीज फर्टिलिटी विच इज वेरी कॉमन. देन वी फील लेस एनर्जेटिक, लेथार्जी फील होता है. देन डिप्रेशन. Because of hormone fluctuation, many females face depression which she cannot judge. Especially, okay, अगर अभी recent हो, for example, in our generation we can understand, but older generation में like a mom and other females, they उनको ना समझता नहीं था कि why this depression is there. They used to think कि just a phase and they used to ignore it, and later on वो ज्यादा बढ़ के आता था. So depression is one of the major thing which female faces, especially when she starts in the when she enters a pre-menopause and perimenopause time. Then there are increased risk of cancer.
पोस्ट 35 एंड 40 जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वेट इश्यूज होते हैं, बैड लाइफस्टाइल है आपकी, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. वी कीप हियरिंग नाउ डेज देयर इज अ इंक्रीज रेशियो ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अकरिंग इन फीमेल्स, देन हार्ट डिसीजेस, बिकॉज आपकी मसल्स लॉस होने लगती है एंड फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, दैट लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक. सो ये सब चेंजेस एक फीमेल फेस करती है वन शी एंटर्स लेट 30s एंड इन आर 40s. सो टू डील विद दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम अगर आ भी रही है, बट इफ यू करेक्ट योर लाइफस्टाइल, इफ यू करेक्ट योर डाइट, देन ये प्रॉब्लम आप नहीं फेस करेंगे. जरूरी नहीं कि फेस करें. एंड इवन इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम, देन यू विल बी एबल टू फाइट दैट. एक ये जनरल गाइडलाइंस है जो एक इंडियन वुमेन की होनी चाहिए. Then now first, I'll just share few pointers कि आप वो आपके रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, so that you have a smooth old age or your smooth mid life. जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है उससे आप प्रॉपरली फाइट कर सकेंगे. फर्स्ट इज हैव अ बैलेंस डाइट. इंडियन फीमेल्स स्पेशली जो होम मेकर है, दे डोंट पे अटेंशन टू देयर डाइट. मे बी अब थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है, तो मे बी पीपल फीमेल्स माइट हैव स्टार्टेड मैनेजिंग द डाइट, बट आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 80 फीमेल्स ऐसी होगी, चाहे वो वर्किंग हो एंड स्पेशली जो होम मेकर्स है, जिनके ऊपर बच्चों घर की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट टेक अ प्रॉपर डाइट. दे जस्ट जो बचता है वो खा लेते हैं, या जो अगर वो अकेले है कोई काम में बिजी है, दे डोंट पे अटेंशन, दे आर हंग्री फॉर लॉन्ग, और जस्ट दे हैव व्हाटएवर लेफ्ट ओवर इट इज. सो वी शुड नॉट डू दैट. यू हैव टू फॉलो अ बैलेंस डाइट. सिर्फ रोटी सब्जी या थोड़ा सा दाल राइस लेके या एनीथिंग जो हेल्दी नहीं है वो लेके आपकी डाइट कंप्लीट नहीं होगी. यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट. जैसे आप ये थाली देख रहे हैं, इसमें राइस भी है, रोटी भी है, ये आपको जरूरी है आपके डाइट में. सो यू हैव टू इंक्लूड राइस, रोटी, दाल. If you're a little over it, you can reduce either rice or roti, any one thing you can take, but you need to have a source of protein, carbohydrate, that is in form of roti or rice, vegetables, curd and salad. You have to include this in your diet. आप रेसिपी अपने हिसाब से उसको वन पॉट मील करके भी कर सकते हैं, लाइक खिचड़ी विथ रायता, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट. The second point is include variety of vegetables in the diet. वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स. ये सबको पता है कि वेजिटेबल्स कितना इंपॉर्टेंट है, एंड उनकी बेस्ट पार्ट है दे आर लो इन कैलोरी. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ वेट एंड यू नीड टू रिड्यूस दैट एक्स्ट्रा केजीज विच इज कॉजिंग यू हार्म, आप आपके डाइट में वेजिटेबल्स इंक्रीज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, सूप्स एंड वेजिटेबल, सो दैट आपका कार्बोहाइड्रेट का जो गुड कार्बोहाइड्रेट है आपके वेजिटेबल्स में वो आपको मिले, और आप रिफाइंड फ्लोर जो रहते हैं, मैदा एंड ऑल, उससे आप दूर रहे. And the most other important factor for your vegetables are they act as a prebiotic. Prebiotic क्या है? Prebiotics are food to your good bacteria in the digestive system. मैंने लास्ट टाइम भी अपने इसमें कहा था कि गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डेज लोगों की सब चीज करेक्ट रहती है, वो डाइट एकदम सोच के लेते हैं, प्रोटीन हर मील में रहता है, दे इंक्लूड एवरीथिंग, दे आर वर्किंग आउट, बट उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वेरी हेल्दी, दे फेस प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन. तो अगर आप तो why this problem happens, because आपके जो प्रोबायोटिक्स है, द गुड बैक्टीरिया आपके सिस्टम में वो कम हो जाते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर. आप ठीक से सोते नहीं है, आपकी डाइट या लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं एट फॉल्ट है, या वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, तो उससे वो खराब होता है. सो इफ यू इंक्लूड प्रीबायोटिक, वो जो गुड बैक्टीरिया उनका फूड है, तो वो गुड बैक्टीरिया को आप प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट देंगे, तो दे विल फ्लरिश एंड दे विल इंप्रूव योर गट हेल्थ, जिससे आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है, सब आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सकता है. And green leafy vegetables especially have are rich source of folic acid and iron, and post 35 you need good amount of iron in your diet, तो वो भी आपको help करेगा. The third is add fruit to your routine. Same like vegetables, fruits are great source of vitamins, mineral, phytochemicals, which is very important for a female to fight off free radicals, यानी कि जो आपके बॉडी में हार्मफुल चीजें हैं उसको वो फाइट करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू ओवरकम मेनी प्रॉब्लम्स. इन्फ्लेमेशन, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इफ यू एड फ्रूट्स टू योर डाइट यू कैन गेट रीड ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन. एंड अगेन इट गिव्स फाइबर, तो आपका कम क्वांटिटी में, कम कैलोरीज में यू गेट ऑल द न्यूट्रिशन, एंड आपका पेट भी भरता है, तो दैट हेल्प्स इन वेट लॉस और मेंटेनिंग योर वेट.
देन दे आर ग्रेट ऑप्शन ऑफ स्नैक्स। एक स्नैक्स की बहुत बड़ी ऑप्शन है, लोग तो तीनों मील्स तो प्रॉपरली ले लेते हैं, बीट लंच ब्रेकफास्ट और डिनर, बट बीच में वेयर दे लैक इज राइट स्नैक्स। द जनरली पीपल देन डायरेक्टली वो लोग चले जाते हैं बिस्किट्स पे या रेडी टू ईट स्नैक्स पे या नमकीन पे। तो इफ यू टेक फ्रूट एज अ स्नैक बिटवीन योर टू मील्स, इट वुड गिव यू द एनर्जी। लाइक एक सिंपल बनाना भी आपको आपको फुल रखेगा, आपको पूरे दिन भर की एनर्जी भी देगा, एंड इट इज वेरी हेल्दी, तो आपका वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। देन फ्रूट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर। वेजिटेबल्स में भी बहुत पानी है एंड आप फ्रूट्स में भी है। जैसे आप वेजिटेबल्स कोई क्लोज लिड क्लोज करके कुक करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें जो वेजिटेबल्स जैसे लौकी है, गिलकी है, रिच गार्ड वगैरह है, वो आपका वाटर लूज करके तो आपका इटसेल्फ उसमें स्टीम हो जाता था। इवन वेजिटेबल्स हैज वाटर एंड फ्रूट्स हैव वाटर। सो आपका जैसे एक आइडियल गाइडलाइन होती है एक नॉर्मल ह्यूमन या एक नॉर्मल अडल्ट के लिए कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर लेना चाहिए। बट मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ वर्क थिंग और या लोग ले नहीं पाते हैं, तो दे कैन इंक्लूड फ्रूट्स इन द डाइट, तो वो भी आपके वाटर को कंट्रीब्यूट करेगा। And always remember that take fruit as a whole and do not take it as a juice. जूस में क्या होता है, फाइबर निकल जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर एंड विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. Yes, when you are out and you have nothing to eat or you are dehydrated, that time you can have a glass of juice. But at home जो general practice है कि orange का season है तो people prefer to have a orange juice rather than orange. So always take care कि fruit को as a fruit ही ले, ना कि juice के form में ले. देन फोर्थ इज इंक्लूड प्रोटीन विथ एवरी मील. प्रोटीन का इंपॉर्टेंस तो आई गेस सबको पता है कि इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, देन आपका मसल मास इंक्रीज करता है, एंड देन इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट. अगर आपकी डाइट में प्रोटीन लैक करता है तो इवन आप पूरा मील लेने के बाद में आपको विद इन 1 आवर आपको भूख वापस लग सकती है, बिकॉज you're not satiated properly. एंड देन सो क्या होता है, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं. सो इफ यू वांट टू लूज वेट, मेक श्योर दैट यू इंक्लूड प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन एनी फॉर्म. आप कर सकते हैं, आप मिल्क के फॉर्म में, कर्ड के फॉर्म में, दालें है, स्प्राउट्स है, सोया प्रोडक्ट यानी सोयाबीन, टोफू, पनीर, कोई भी फॉर्म में. आप नॉन वेजिटेरियन तो आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एनी फॉर्म, बट आपके तीनों मील्स में प्रोटीन इंक्लूड होना चाहिए. Then fifth is include superfoods. Like Superman had सुपर पावर्स, वैसे ही सुपर फूड्स में सुपर पावर्स है जो आपको आपके डाइट में स्पेशली व्हेन यू एंटर इन योर 40s ये जरूर इंक्लूड करना है, बिकॉज दे हैव लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 विच इज गुड फॉर योर हार्ट, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए. विथ एजिंग आपकी ब्रेन फंक्शनिंग और नर्वस फंक्शनिंग भी, नर्वस सिस्टम भी चेंजेस आते हैं. सो इफ यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट, आपको जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम फेस करेंगे इट वुड बी वेरी लेस, इन वेरी लिटिल क्वांटिटी, या प्रॉब्लम फेस ही ना करे, एंड यू विल ग्रो इन अ हेल्दी, यू विल हैव अ हेल्दी ओल्ड एज. ये बोलते हैं ना, बुढ़ापा एकदम अच्छे में जाएगा. दे प्रोवाइड विथ विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट. अब ये सुपर फूड्स क्या है, आंवला. आंवला भी मिलने लग जाएगा. यू कैन हैव इट इन फॉर्म ऑफ चटनी, यू कैन हैव इट फ्रेश, अचार डाल सकते हैं, और समटाइम्स यू कैन हैव आंवला शॉट, आंवला जूस का शॉट. आंवला इज रिच विथ विटामिन सी ऑल्सो, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है. इफ यू आर फेसिंग हेयर प्रॉब्लम, आंवला बहुत हेल्प करेगा. विटामिन सी है तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा. देन रागी, घी. घी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही लोगों को घी का नाम होता है, मोस्ट ऑफ देम डरते हैं कि नहीं हमारा वेट बढ़ जाएगा, या आई एम ऑन वेट लॉस सो आई डोंट नीड टू टेक घी. घी इज वेरी गुड ओनली इफ यू डोंट हैव एनी हार्ट प्रॉब्लम, पहले से आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ना हो तो आप ले सकते हैं. बट इफ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन यू शुड रिफ्रेन यूजिंग घीज, वरना यू कैन इजिली टेक एटलीस्ट 1 टीस्पून ऑफ घी एवरी डे. चाहे आप तड़का लगाइए या आपकी रोटी पे लीजिए या राइस में डाल के खाइए, देयर इज नो इश्यू इन इट. देन फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, एवोकाडो है, डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट इज एक्सीलेंट फॉर मूड लिफ्टर. क्या होता है, पोस्ट 35 जब हार्मोन बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं, यू फेस वेरियस प्रॉब्लम. एक पीएमएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. पीरियड्स आने के पहले आपकी मूड स्विंग्स होते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स मूड स्विंग्स होते हैं, देन व्हेन यू आर इन योर मेनोपॉज फेज तब बहुत मूड स्विंग्स होते हैं. तो डार्क चॉकलेट फ्लेवोनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी मूड को ठीक करता है.
एंड ये आपके क्रेविंग्स के लिए भी अच्छा है, कि बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं दैट आफ्टर डिनर लंच वी नीड समथिंग स्वीट, आई क्रेव फॉर स्वीट। तो एक पीस ऑफ डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड, वो आपका मूड भी लिफ्ट करेगा और आपकी स्वीट क्रेविंग को भी दूर करेगा। Then pumpkin and sunflower seeds, they are very good in maintaining your hormonal levels, तो आप वो आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इनको एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं। आप सब सीड्स है, पंपकिन है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, अलसी, इनका एक मिक्स बना सकते हैं, उसमें थोड़े से डार्क चॉकलेट डाल के यू कैन कीप इट, और वो आप ऐसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स या आप आपके ऑफिस में, आपके घर में स्टोर करके कर सकते हैं। उससे आपकी कैलोरीज भी कम रहेगी एंड आपका वो स्नैक ऑप्शन भी फुलफिल होगा। Then sixth is include phytoestrogens in the diet. Now with aging, और जैसे से एज होती है फीमेल्स के, इसमें जो मेन फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी लेवल डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फीमेल फेस करती है। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस आर प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स, और वो ईस्ट्रोजन का ही रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। तो अगर आपका नेचुरली बॉडी में जो ईस्ट्रोजन सिक्रेशन है वो अगर कम है, तो बाय एडिंग फाइटोएस्ट्रोजन इन योर डाइट, that is including a source of phytoestrogen in your diet, आप वो कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आपकी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, एंड यू विल हैव अ स्मूथ मेनोपॉज। सोयाबीन एंड इट्स प्रोडक्ट, फ्लैक्स सीड्स, बीन्स, स्प्राउट्स, ये सब इसका सोर्स है, तो इंक्लूड दिस इन योर डाइट। सोयाबीन यू कैन इंक्लूड, बट फॉर फीमेल्स who have hypothyroidism, they should avoid or they should limit the use of soybean. देन विथ एजिंग, जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी में बोन डेंसिटी कम होती है, सो वी नीड टू इंक्लूड कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड। कैल्शियम एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ, बिकॉज विथ एजिंग ऑस्टियोपोरोसिस का इंक्रीज होता है, देयर इज मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ओबेसिटी, वीक बोन्स, ये सब होता है। तो इफ यू इंक्लूड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड, आप इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रागी, बाजरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, you can include. Then vitamin D जो vegetarian है उनके लिए best source है sunlight, and if it is very low, then you can go for supplements. And I would suggest कि every female who is post 35, once in 6 months वो आपका regular health checkup उनको कराना बहुत जरूरी है. It includes all the blood parameters and physical checkup whatever is needed, so that you have a note कि मेरी body में किसकी deficiency, so that you can fulfill that deficiency and आपको problem नहीं जाएगी आगे. Then the reduced intake of caffeine. Caffeine is very addictive. Females are very addictive to chai, especially, and coffee too, that they need at least 2 to 3 cups of tea from the morning till lunchtime. And उसमें क्या होता है, chai suppresses, tea suppresses your appetite, so you don't feel hungry. So females get that mind कि I had a cup of tea, so I don't need to take any meals and I can work for long, and then they keep on working and suddenly lunch के time पे एकदम से भूख surge होती है and they end up eating more than required. And plus कैफीन जो रहती है, चाहे वो टी की हो, कॉफी की हो, it reduces the nutrient absorption in your body. So even if you're taking a good न्यूट्रिएंट रिच मील, बट आप अगर चाय या कॉफी की क्वांटिटी आपके डेली रूटीन में ज्यादा है, तो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, सो जो आप वो मील ले रहे हो उसका कोई फायदा नहीं. सो यू शुड टेक maximum of 2 cups of tea or coffee in a day and not more than that. Now this is very important, practice clean eating, or you can say mindful eating. What is this? That clean eating or mindful eating, that is you have to include whole grains instead of refined product. Yes, आप आपके डाइट में मैदा या मैदे से बनी चीजें, बीट बेकरी प्रोडक्ट और एनी फूड डिशेस, वो आपको उसका इंटेक कम लेना है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो आपकी सिर्फ फैट परसेंटेज या कैलोरी बढ़ाएगा. यू इंक्लूड होल ग्रेन्स, यानी दलिया है, ओट्स है, नॉर्मल रोटी है, जवार, बाजरा, रागी, ये डिफरेंट आटा जो होते हैं, मिलेट्स एंड ग्रेन्स आटा, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. देन होल जो दालें हैं वो आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. देन रिस्ट्रिक्ट द इंटेक ऑफ शुगर, शुगरी ड्रिंक्स एंड हाई सॉल्ट फूड. शुगर इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर बॉडी, यानी इवन 1 टीस्पून आप बोलो कि नहीं मैं सिर्फ 2 बार चाय पीती हूँ, बस उसी में हाफ टीस्पून या 1 टीस्पून लेती हूँ, बट दैट 1 टीस्पून ऑल्सो लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम. So you can replace your sugar with jaggery or stevia. No artificial sweeteners. जो sugar free आता है वो भी बहुत harmful है, and very big reason behind the increasing rate of cancers, because they are artificial. So either you can take stevia
और जैगरी इन योर टी इफ यू डोंट लाइक शुगर फ्री टी, यानी कि बिना शक्कर की चाय आपको नहीं पसंद है, दैट यू इंक्लूड एंड रिप्लेस योर डिशेस व्हिच नीड शुगर विद जैगरी और नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर लाइक डेट्स है या फ्रूट्स है, आप उससे आपकी स्वीट डिश बना सकते हैं रादर देन यूजिंग शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक शुगर फ्री एंड शुगरी ड्रिंक लाइक आई सेड कि जूस की जगह हैव होल फ्रूट्स. देन ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन. विद कोविड मोबाइल का यूज और ज्यादा हो गया बिकॉज एक साल पूरा लॉकडाउन था, तो वी गॉट हैबिचुअल टू आवर ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म और आ मोबाइल. सो एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ आप एक मील घर पे, आप जो पुराने ट्रेडिशन से होता है नीचे बैठ के, इफ योर जॉइंट्स परमिट, नीचे बैठ के प्रॉपरली खाए विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड एंजॉय एंड सेवर द फूड. आप जो खाना खा रहे हो उसको एंजॉय करके खाइए. जस्ट डोंट ईट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग कि बस खाना खाना है, फटाफट खाओ और जाओ. डोंट डू दैट. यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग और स्टार्ट ईटिंग इट विदाउट डिस्ट्रैक्शन. अगेन, जब आप कोई टीवी या मोबाइल के साथ खाते हैं, आइदर यू ईट टू फास्ट और यू एंड अप ईटिंग बिग मील, यानी कि जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेते. सो विद दैट च्यू योर फूड स्लोली. बहुत ज्यादा होता है कि फीमेल्स मैक्सिमम 5 मिनट में अपना पूरा खाना फिनिश करके दे आर डन. यू शुड एटलीस्ट ईट फॉर 10 to 15 minutes और च्यू योर फूड, यानी 1 bite फॉर एटलीस्ट 15 to 20 times. स्टार्ट विथ 1 मील, एक मील से स्टार्ट करिए जो आप रिलैक्स होके खा सकते. अगर वो डिनर भी है तो डिनर में मेक अ नोट कि मैं प्रॉपरली विदाउट डिस्ट्रैक्शन नीचे बैठ के स्लोली खाना खाओगी. इफ यू आर फिनिशिंग योर फूड इन 5 minutes, मेक अ पॉइंट कि आप एक वीक तक वो 7 to 8 minutes में फिनिश करें. जब आप 7 to 8 minutes में कंफर्टेबली फिनिश कर पाएंगे, देन यू कैन मेक इट अप टू 10 to 12 minutes. ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं, बट स्टार्ट डूइंग इट. यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल सी कि आप कितना उससे आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. देन वाटर इनटेक, एज आई मेंशन, वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, वेट के लिए अच्छा है. सो यू नीड टू हैव 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. वाटर सिर्फ प्लेन वाटर नहीं, आप डिटॉक्स वाटर यानी कि वाटर में कोई फ्रूट डाल के फ्लेवर्ड वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हैं, सॉल्टेड लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट, या कोई फ्रूट खा सकते हैं टू फुलफिल योर वाटर इनटेक. देन ईट स्मॉल मील्स इंस्टेड ऑफ हैवी मील्स. जनरली क्या होता है, एक हैबिट होती है कि 2 large meals लेके यू आर डन. Divide your 2 meals and into at least 3 to 4 meals. Breakfast, lunch, and dinner, this is compulsory. But apart from that, you can include 2 snacks in between. कि आपके breakfast and lunch में gap है, तो you can have a snack, a fruit or anything in between. And evening में you can have a salad or bowl of salad or a vegetable juice in between. So that आप जब आप डिनर के लिए रहोगे तो यू आर नॉट वेरी हंग्री, सो यू वोंट ईट, एंड अप ईटिंग मोर. क्या होता है जब व्हेन यू हैव अ लार्ज गैप, you end up eating more in the meal which is taken after the gap. So to avoid that overeating, you need to divide your meals into 3 to 5 small meals. And the most important is sleep. बहुत लोगों को होता है कि डाइट ठीक से है, वर्कआउट भी ठीक से, सब कुछ है, बट दे डोंट स्लीप प्रॉपरली और दे डोंट हैव गुड नाइट स्लीप, यानी कि एक तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है या दे जस्ट स्लीप फॉर 4 to 5 hours बिकॉज समवन इज वर्किंग, किसी किसी को नींद की प्रॉब्लम है, एंड समवन इज एडिक्टेड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म और रात को सीरीज या मूवीज फिनिश करते. सो यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 hours एंड दैट इज गुड नाइट स्लीप. दैट मीन्स आप जब सुबह उठो तो यू आर फ्रेश और यू डोंट रिमेंबर दैट व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ. बहुत बोलेंगे मुझे पता ही नहीं मैं क्या मेरे को सपना आया. दैट मीन्स यू वर इन अ डीप स्लीप विच इज अ वेरी गुड साइन. 9th इज मेंटेन हेल्दी वेट. विथ एजिंग आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं. द मेजर चेंजेस की मसल मास रिड्यूस होने लगता है एंड फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है. दैट इज नेचुरल चीज. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मॉल मील्स, माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करनी है, वाटर ठीक से लेना है. सो दैट वुड हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट, या फिर जो आपका प्रेजेंट वेट है जो विच इज इन द नॉर्मल रेंज, उसको मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी. And other thing which you can include is physical activity. A simple walk every day for 30 minutes is very good. अगर आपको टाइम नहीं है कि आप योगा क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, जुम्बा, एनीथिंग, जिम नहीं जा सकते, simple walk for 30 to 45 minutes every day is more than enough to maintain a healthy weight range. And last is be happy.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ फॉलो कर लीजिए कि आपने क्लीन ईटिंग पैटर्न फॉलो किया, सब फ्रूट्स भी इंक्लूड किए, वेजिटेबल्स भी किए, वाटर भी ले रहे हो, स्लीप भी रहे हो, बट यू आर स्ट्रेस्ड इनसाइड, आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें खुशी नहीं है, तो देयर इज नो यूज। सिचुएशन आएगी जाएगी, वी ऑल इन दिस वर्ल्ड, फॉर अस कोविड वॉज वेरी न्यू थिंग, बट सबने उसको फाइट किया, वी फाउंड डिफरेंट वे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म आ गया है, from sitting at one end of the world you can contact with, or you can learn from anyone around the world. So ये सब form हुआ है, so you have to be happy जो situation है, it would go on if you have a positive attitude. And how can you keep that positive attitude? परस्यू हॉबी। आप पहले जब यंग थे, आप कुछ को पसंद था, किसी को डांसिंग पसंद थी, कोई रीडिंग का शौक था, या किसी को पेंटिंग का शौक था, बट दे स्टॉप्ड डूइंग इट बिकॉज ऑफ फैमिली मैटर्स, यानी कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। सो स्टार्ट डूइंग इट अगेन, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, और यू कैन डू जॉइन सम डांस क्लास, एनीथिंग। तो वो आपको आपके बॉडी में फील गुड हार्मोन जो होता है उसकी रिलीज ज्यादा बढ़ेगी, तो इट वुड मेक यू हैप्पी। मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स, कैचअप करिए, आजकल वीडियो कॉलिंग का हर जगह, यू कैन डू दैट। मेडिटेशन इज वेरी गुड, यू शुड, everyone should practice at least 5 to 10 minutes of meditation once a day. Either you can start your day with meditation, or you can end your day with meditation. Listen to music. Music has a great therapeutic effect, you can do that, or you can go on vacation. But looking into the present situation, आप situation और covid की देख के है, you can do that. So to fight this midlife crisis, you need to just lined up your life in correct order. Healthy eating lifestyle pattern follow कीजिए, which has good healthy diet, clean and or mindful eating pattern, and physical activity. So that would help you to sail through this difficult midlife crisis. Thank you. Thank you so much, Divya. If anybody has any question, can ask Divya. Divya, are you ready for the questions? Yes, ma'am. Okay. So she is ready. She play bat and ball. and Either the webinar was too informative or was too simple. No, you have explained really well. That's why I think everything is clear to them. Thank you, Vaishali ji. So I am sharing one screen. Ma'am, in share. workout, which is the best one? I know there are many, like yoga. Yes, ma'am, it depends upon your physical condition. Like आपके अगर knees भी all Hello, are ma'am, perfect. can I talk? Yeah. Yes, Vaishali ji. Ma'am, in exercises, which is the best one, ma'am? There are many forms of yoga also. There are many dance yoga also. Many things. What do you suggest for a working woman, especially? Ma'am, for working women, you have to adopt, or you have to follow that exercise which is easily doable by you. Like आपकी routine, working routine को जो comfortable हो वही. Don't go overboard कि आप वो ऐसी exercise आप join कर लो and then you're not able to maintain it with your work, then it is difficult. Simple walk जैसे मैंने बोला, you can start with, जैसे in M Health we are running a health challenge, so then there we give small challenges, जैसे कि पहले सिर्फ 4000 steps बोलते, then 6000, then we increase. So you can just go for simple walks and count your steps. You can do that. या योगा है, aerobics है, it depends upon your joints. अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो डोंट देन अवॉइड गोइंग फॉर जुम्बा और एरोबिक्स, जहां आपके थोड़ा प्रॉब्लम हो, यू कैन गो फॉर योगा. एंड अगर आप कंफर्टेबल है देन जुम्बा एंड एरोबिक्स आर वेरी एनर्जेटिक, व्हिच इज वेरी यूजफुल. जो आपको क्या होता है, म्यूजिक के साथ में यू वर्क more, even more, and you are more interested in doing that. So any form of exercise which you're comfortable and which is easily gelling up with your routine, वो आपको follow करनी चाहिए. Thank Anyway, you. you can tell about weight loss challenge Yes. as well. And now M Health, looking into this present scenario और जो problems आ रही है, M Health is running weight loss challenge since 2 months. This is the third month that M Health would be running this challenge, where
we give small targets every week, which is very easy and achievable, and which leads to a sustainable what you can say eating habits, where you can lose up to 4 kg in a month. अगर आप वो properly follow करते हैं तो आप 2 to 4 kgs आप easily lose कर सकते हैं, आपकी healthy habit होती है. जस्ट जैसे मैंने आपको बोला कि आप वो ऐसी एक्सरसाइज करिए कि जो आप आपके वर्किंग पैटर्न के साथ फॉलो कर सके, सेम वी गिव सच चैलेंजेस कि जो आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देती है, यानी कि आप वो लंबे तक फॉलो कर सकते हो. इट इज नॉट टेम्पररी. एंड आपकी फिटनेस करते आप वेट लूज करेंगे तो अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, यू विल ओवरकम दैट, तो स्लोली यू विल इंप्रूव योर फिजिकल हैबिट. एंड सेम स्ट्रेस एंड स्लीप क्वालिटी, जो मैंने बहुत किया कि आजकल स्लीप क्वालिटी हैज डिक्रीज्ड, लोग सोते नहीं है प्रॉपर्ली, दे हैव डिस्टर्ब स्लीप. सो इफ यू फॉलो ऑल आर challenges every week, so you will be able to see improvement in overall health, physically भी, emotionally भी and mentally भी. आप तीनों में आपको वो इफेक्ट करेगा. And they are very doable. Even if you're working, आपको उसमें हेल्प करेगा. We have a special individual coach to you जो आपको गाइड करेगी. And there are yoga classes, fitness classes which MLT is arranging so that you can follow it and do it at home. आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी कि मैं कहाँ जाऊँ वेट के लिए एक्सरसाइज करने. So it is the next session. One session is going on. The next session would start from 16 September. You can message on the number for details. It would be really helpful for you. There are two questions. First is, any specific product to conquer menopause? Like you can include what I said, phytoestrogen. Menopause में main होता है the decrease in hormone of estrogen. Estrogen hormone की बहुत fluctuations होती है, उसका जो normal amount है उससे कम होता है. So that including soy product, flax seeds, pumpkin seeds, this all thing natural product आप include करेंगे, that would help you to overcome the side effect of menopause. There is hot flashes है या excessive sweating है, mood swings है, वो help करेगा. And there is one comment actually. After listening to you, it is by Aradhana ji. After listening to you, I was just reminded of my supplements and just now made my timetable of taking vitamin C, calcium, and omega. Thanks a lot. It was a wonderful session. And Aradhana ji, I would suggest you that, okay, vitamin, calcium, just first, before taking any supplement, you should go for a blood check. First, see what the blood parameters says, then start with the supplement. Many times your blood parameters are normal, so even taking extra supplements would harm you. So you need to take a blood check, or you can get your blood check done. There are many laboratory which gives you complete package जिसमें आपका सब blood parameters आता है, then you can start with supplements. One more question about the morning drink. Morning drink, the best morning drink is plain water. You can start your day with plain normal water or warm water. But if you're facing some hormonal issue, you can start with jeera and cinnamon water. Soak half teaspoon of jeera and one small piece of cinnamon in 1 glass of water overnight. In the morning, you can just boil it, strain it, and you can have it. And the best drink which I prefer or which I can suggest is plain water. Start your day with plain water, or otherwise and jeera water is also good for your hormonal issues. So I think questions are over. I would always suggest that if for a female post 35 or in late 30s or 40s, you should get your blood check and complete health checkup done once in 6 months. उससे आपको पता चलेगा आपकी क्या deficiency है, कहाँ आपको correct करना है. तो इसीलिए. And we have shared a link in the chat box where you can fill the form for the weight loss challenge. And other queries also can be answered if you fill this form. So we can contact you after you fill this form. So many applauses for you, Divya. Thank you. By Ashwini, Aradhana, Pinky ji. Thank you so much to all of you for joining in. We will be there again on Friday at 4 p.m. with another interesting session. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Divya. Thank you. Thank you too, ma'am.